Hello everyone. Today's video is on contract of guarantee. There will be two videos of this topic. Today I am going to deal with 5 topics. First, the definition of guarantee, then the features and the difference between indemnity and guarantee, then surety's liability, at last kinds of guarantee. Fine. So, contract of guarantee has been provided from section 126 to 147 of Indian Contract Act 1872. Section 126 explains us what is contract of guarantee. So contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of the third person in case of his default. Okay, so suppose you pay loan to my friend, okay, and I assures you that if my friend fails to pay you the loan, then on his behalf I will make the payment. Okay, यहाँ पे हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन का डिफॉल्ट हो रहा है. That is why on his default I am going to pay you the money. Fine. So here there will be 3 parties. I guarantees. So I am giving you the surety. I will be surety. You will be the creditor, the person who gives the loan, and my friend will be principal debtor. Okay. So the person who gives the guarantee will call surety. Okay. The person in whose favor or to whom the guarantee is given is called creditor, and the person in whose default the guarantee is given, ठीक है, उसका default हो रहा है, in whose default the guarantee is given will called principal debtor. One more example. Suppose A takes loan from bank, okay, and B assures bank that if A fails to repay the money, I will pay the money to the bank on A's default. Fine. So here A will be the principal debtor जिसने loan लिया, okay, and bank will be the creditor जिसने loan दिया, and here B will be surety, ठीक है, जिसने गारंटी दी बैंक को कि भाई ए अगर नहीं पे कर पाएगा उसको लोन दे दो, अगर वो फेल हो गया तो मैं हूं ना, मैं तुमको लोन दे दूंगा. फाइन. सो द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर. ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर को एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी. अगर वो किसी को लोन देगा तो उसके पास कोई और पर्सन होना चाहिए अगर जिसको लोन दिया है वो फेल हो जाए. ठीक है. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी टू द पर्सन हु गिव्स द लोन. फाइन. ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. Now, features of guarantee. Number 1, guarantee may be either oral or written. Okay. Second, there must be principal debt. Okay. That means there must be principal debt or obligation that must be discharged by the principal debtor. यहाँ पे already कोई obligation होनी चाहिए जो कि principal debtor को fulfill करनी चाहिए. Okay. And if principal debtor fails to fulfill, then the surety will be liable. Fine. Number 3rd is benefit to the principal debtor is sufficient consideration. Section 127 explains us that anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor is sufficient consideration
for the surety's liability. अगर कोई भी ऐसा कंडक्ट हुआ है या कोई भी ऐसी चीज हुई है जिससे कि प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉमिस हुआ है जिससे प्रिंसिपल डेटर को प्रॉफिट हो रहा है, देन श्योरिटी विल बी ऑटोमेटिकली लायबल. फाइन. नाउ द लास्ट फीचर इज द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी should not be obtained by misrepresentation or concealment of material fact. Okay. Section 142 deals with guarantee obtained by misrepresentation, and Section 143 deals with guarantee obtained by concealment of fact. Suppose creditor ने श्योरिटी की गारंटी कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट्स को छुपा के करी हो जिसकी वजह से शायद श्योरिटी गारंटी देता ही नहीं. सपोज प्रिंसिपल डेटर में भी अपने पास्ट कंडक्ट में कोई ऐसा फ्रॉड किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर भरोसा ना किया जाए, एंड वो कंडक्ट क्रेडिटर ने छुपा लिया, ठीक है, श्योरिटी से छुपा लिया. So in that situation, surety will not be liable for that concealment of fact. Okay. Now, hope you have understood the definition of contract of guarantee and the features. There are 4 features, and in contract of guarantee, it has been provided under section 126. Okay. Now, we will make a distinction between contract of indemnity and contract of guarantee. So the first difference is, in contract of guarantee there are 3 parties. First, principal debtor, second, creditor, and the third is surety. But in contract of indemnity there are 2 parties. First, indemnifier, and the second is indemnity holder. Fine. Now the second difference. In contract of guarantee there are 3 contracts. How? The first contract is between the creditor and principal debtor, जिसने लोन दिया and जिसको लोन दिया. Fine. Second is between surety and creditor. श्योरिटी ने गारंटी दी क्रेडिटर को, ठीक है, एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी. ठीक है, कैसे? श्योरिटी आफ्टर डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन कैन रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर. ओके, जब श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे दे देगा उसके बाद वो जाके प्रिंसिपल डेटर से पैसे मांगेगा कि मैंने तुम्हारा लोन मैंने पूरा किया है, अब तुम मुझे लाके पैसे दो. फाइन. नाउ द इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. ओके. नाउ द थर्ड डिफरेंस इज, in contract of guarantee there is a security to the creditor. okay, यहाँ पे creditor को security provide होती है in case of default of principal debtor. okay, but in contract of indemnity indemnity holder will be entitled at the time of loss. okay, यहाँ पे इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर के लिए लाइबल होगा. ओके, यहाँ पे इंडेमनीफायर एट द टाइम ऑफ लॉस विल बी लाइबल टू द इंडेमनिटी होल्डर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी. ओके, यहाँ पे सेकेंडरी कैसे? जब प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, देन श्योरिटी विल पे द मनी. बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज द प्राइमरी.
ठीक है, यहाँ पे इंडेमनीफायर की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडेमनीफायर की ही लायबिलिटी होती है इंडेमनिटी होल्डर को बचाने की. ओके, द लास्ट डिफरेंस इज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी कैन रियलाइज द अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. यहाँ पे श्योरिटी जब क्रेडिटर को पैसे दे देगा उसके बाद वो प्रिंसिपल डेटर से पैसे ले सकता है. बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर कैन नॉट टेक और कैन नॉट रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम एनीबॉडी. एक बार जो इंडेमनिटी होल्डर को दे दिया सो दे दिया, अब वो किसी के पास जाके पैसे नहीं ले सकता है. ओके, so these are the differences between contract of indemnity and contract of guarantee. Now we come to the surety's liability. Okay, so section 128 talks about the surety's liability. Okay, so surety's liability is coextensive with that of principal debtor. What you understand by this? That जो भी लायबिलिटी श्योरिटी की है वो बिल्कुल सेम है प्रिंसिपल डेटर की तरह. ठीक है, इक्वली है, सेम है. जो भी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी होगी वो ही लायबिलिटी श्योरिटी की होगी. ओके, एंड क्रेडिटर हैज द राइट, उसके पास राइट है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्रेडिटर चाहे वो प्रिंसिपल डेटर के पास जा सकता है चाहे वो श्योरिटी के पास जा सकता है पैसे लेने के लिए. ओके, ही इज नॉट बाउंड टू फर्स्ट गो टू द प्रिंसिपल डेटर. ठीक है, यहाँ पे कोई उसको नहीं बोल सकता है कि तुम पहले जाके प्रिंसिपल डेटर से लो फिर श्योरिटी के पास आना. क्रेडिटर के पास फुल अथॉरिटी है, वो प्रिंसिपल डेटर के पास जा सकता है लोन पैसे लेने के लिए, वो श्योरिटी के पास भी जा सकता है पैसे लेने के लिए. ओके, एंड इन केस ऑफ नारायण सिंह वर्सेस छत्तीसगढ़ it has been laid down that in case the liability of the principal debtor scaled down or extinguished, then the liability of the surety pro tanto will scale down or extinguished. That means जब भी if in case कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी कम कर दी या खत्म कर दी, एट दैट मोमेंट ओनली श्योरिटी की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी टू दैट एक्सटेंट. प्रो टैंटो मीन्स टू दैट एक्सटेंट फॉर विच श्योरिटी वॉज लायबल. फाइन. ओके, सो दिस वॉज श्योरिटीज लायबिलिटी. श्योरिटीज लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही होगी जितनी प्रिंसिपल डेटर की होगी. ठीक है, एंड क्रेडिटर हैज फुल अथॉरिटी कि वो किसी से भी लोन ले, किसी से भी पैसे ले सकता है, चाहे वो श्योरिटी से ले सकता है चाहे वो प्रिंसिपल डेटर से ले सकता है. फाइन. एंड वन मोर थिंग, इफ देर इज अ कंडीशन दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ को श्योरिटीज. ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि को श्योरिटीज का होना जरूरी है, then in that case surety will only be liable. श्योरिटी तभी लायबल होगा जब बाकी को श्योरिटीज भी होंगे कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, अगर को श्योरिटीज नहीं हुए तो श्योरिटी मना कर देगा कि मैंने बोला था कि बाकी श्योरिटीज भी होने चाहिए, को श्योरिटीज होने चाहिए, वो नहीं है तो मैं लायबल नहीं बनूंगा. फाइन. Okay, so this was surety's liability which has been provided under section 128. Now we come to the last topic, that is kinds of guarantee. So there are two types of guarantees. First, specific guarantee and the second one is continuing guarantee. Okay, specific guarantee is for single transaction. ठीक है, एज वर्ड स्पेसिफिक डोनेट्स, सिंगल ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए
कि भाई एक सिंगल डेट हुआ, उसमें पेमेंट हुआ, खत्म. बट इन कंटिन्यूइंग गारंटी देयर विल बी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, इन कंटिन्यूइंग गारंटी देयर विल बी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए, सपोज 1 साल के लिए कोई भी गारंटी. फाइन. एंड इन continuing guarantee, surety can revoke his guarantee. ठीक है, can revoke his liability anytime. कैसे रिवोक करेगा? by giving notice to the creditor. ठीक है, श्योरिटी को अपनी लाइबिलिटी हटना है लाइबिलिटी से, देन वो क्रेडिटर को नोटिस देगा एंड वो आगे के ट्रांजैक्शन के लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल नहीं होगा. बट ही विल बी लायबल बिफोर दैट रिवोकेशन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी रिवोक कर लिया तो जो पीछे के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके पैसे मैं नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसके रिवोकेशन से पहले हुए थे. बाद के लिए तो वो नहीं होगा, बट पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुए थे उसके लिए श्योरिटी विल बी लायबल. फाइन. सो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी डन इन 2 ways. First, by giving notice to the creditor. Second, on death of surety. जब श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी. द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड, बट ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्योरिटी विल बी लायबल. ओके, किस चीज के लिए लायबल? जो भी ट्रांजैक्शन उसकी डेथ से पहले हुए थे उनके लिए. फाइन. ओके, सो दिस वाज द काइंड्स ऑफ guarantee. If you have any doubt or queries, you can ask me on comment, and please like, subscribe and share to my channel. Thank you.